हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12th के लिए सेकेंड टर्म का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और प्रोबेबली ये एग्जाम आपका मार्च महीने में होगी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पब्लिश किया गया है। मैं इस वीडियो में उस मॉडल सेट का मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन को व्याख्या सहित आपके सामने रख रहा हूं। मुझे लगता है ये आपको बहुत अधिक काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिया गया मॉडल सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Capacitive reactance means the resistance provided in the circuit when there is a capacitor is used। अर्थात अगर कोई सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस कैपेसिटर के द्वारा जो सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं द कैपेसिटिव रिएक्टेंस is the resistance of the circuit containing capacitance। It is denoted by XC। For your convenience, XC is equal to 1 by omega C। XC is equal to 1 by omega C। 1 by omega C, omega is equal to 2 pi nu। Omega is equal to 2 pi nu। Hence we can write Xc is equal to 1 by 2 pi nu into C। That is, it is indirectly proportional to the frequency। Means the capacitive reactance will be inversely proportional to the frequency। This is the answer for the first question। Second question, show graphically the variation of inductive reactance with frequency। Inductive reactance, question number 2, inductive reactance means the resistance when any inductor is connected with the circuit, and this inductive reactance is denoted as XL, and the value of XL is omega L, that is 2 pi nu L। It is directly proportional to the nu। Means if the frequency increases by keeping the coefficient of the inductance, then the inductive reactance will increase as
the value of nu or frequency will increase. Hence, if you draw a graph, it is directly proportional. Means if you draw a graph L versus nu, the straight line will give you the value of XL. Nu, the XL will increase as per nu will be increased for constant coefficient of inductance. Hence, the graph will be like this. Third question is truth table for the AND gate. AND gate have two input and one output. When the signal is given to the both of the input, then output we will find the output. Otherwise, we cannot find the output. Means there is, if you give the signal in both of the input, then you will find the output signal. That is, if A and B are two input, then A and B is denoted as A into B is equal to Y, and its truth table will found like this. If input signal given to get A and did not input signal given to get B, then no output signal will be found. If input signal did not given to A, output signal given to B, then no output signal, input signal is given to B, no output signal will found. If input signal in A is given, input signal in B is given, then output signal will be found. If no signal for the input in gate A, no signal in B, then there is no signal. This is the truth table of AND gate. A dot B is equal to Y represent the AND gate. Now question number 4. Question number 4. Question number 4 is associated. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है? ये है कि जब हम लोग कोई विशेष मेटल पर विशेष फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन को डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. अब इस घटना में एक विशेष फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है जो इस मेटल के आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकाल दे, और इसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और जितना एनर्जी इसके लिए खपत होती है इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन. और हेंस वर्क फंक्शन W is equal to H nu 0, where H is the Planck's constant, and nu 0, nu naught be the threshold frequency. Threshold frequency. Hence, its result is W is equal to H nu 0. Question number 5. How does the frequency of the ultraviolet light change
when it goes from air to glass। देखिए, ये घटना रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन, प्रकाश का रिफ्रैक्शन मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसके क्रम में प्रकाश अपने पथ को बदल देता है। तो इसके बदलने में प्रकाश का फेज और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसका वेवलेंथ एंड स्पीड ये दोनों बदल जाता है। जितना डेंसर मीडियम होगा उसका वेलोसिटी उतना ही कम हो जाएगा, और जितना रेयरर मीडियम होगा उस मीडियम में वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट हाउ कैन चेंज। Means the frequency of the any light does not change, means the ultraviolet light also not change. That is your answer for question number 5. Question number 5 is there is no change, there is no change in frequency of ultraviolet light when it comes from when it comes from air and go into glass। This is the answer of question number 5. Now, question number 6. Write any one condition for the sustained interference. For the sustained interference, an important condition is the two sources should be coherent. जब इंटरफेरेंस सस्टेन करेगा तो इंटरफेरेंस सस्टेन होने के लिए जो दो स्रोत हम लेंगे जिससे प्रकाश किरणें किसी माध्यम में एक साथ संचारित होगी और वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हुई आगे निकलेगी, और जहाँ पर ये सेम फेज में काटेगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पर ये अपोजिट फेज में काटेगा वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन इस इंटरफेरेंस की घटना को संपादित होने के लिए आपका द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। दैट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर sustaining interference. That is, the two sources must be coherent. The two sources must be coherent. Now question number 7. Question number 7. Maximum kinetic energy of a photoelectron is 5 electron volt. What is the value of the stopping potential? देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इजिकल टू E V naught. E V naught. V naught is the stopping potential. Where V naught is stopping potential. Okay. V naught is stopping potential. Now, stopping potential. Now, here max kinetic energy is given 5 electron volt. That is 5 electron volt is equal to E into V0. E cancel, hence V0
is equal to 5 volt. That is my stopping potential is 5 volt. This is the question of group A containing 1 marks each. Containing 1 marks each. Now, for the section B, the question number 8 in section B. Section B. The electric field of a plane electromagnetic wave in vacuum is given by Ex is equal to 0, Ey is equal to, it is given by Ex is equal to 0, Ey is equal to 0.5 cos 2 pi into 10 to the power 8 t minus x by c, t minus x by c, and Ez is equal to 0. Az is equal to 0. The electromagnetic wave, from the electromagnetic wave equation, E intensity of the electrical field is equal to E0 cos kx minus omega t plus phi. But E0 is the amplitude. That is the maximum value of the electrical field. Here, Ex is equal to 0, means there is no electrical field in the x direction. Ez is equal to 0, means there is no electrical field in the z direction. Ey is this value, cos ka value at the maximum value of 1, means its maximum amplitude is 0.5, whereas this is this. Now you must know, if this is the x direction, this is the y direction, this is the z direction, then if electromagnetic wave propagate in x direction, then electrical field, electromagnetic waves in x direction, then electrical field should be in y direction and magnetic field would be in z direction. This is the case. And at any displacement, the value of the electrical field can be obtained by this. If this function is negative, then the electromagnetic radiation is propagating opposite to the x direction. And here you can see this is the negative. This is the k value of k into t, that is the omega also, omega t minus 2 pi into 10 to the power 8 by c is equal to k. 2 pi 10 to the power 8 into x by c is equal to k, that is known as the wave numbers constant, and this is the omega t. Here omega t is positive and displacement kx is negative. That means the wave is propagating opposite to the x direction, and hence its electrical field and magnetic field will be, its magnetic field will be opposite to the z direction and electrical field will be in the y direction, and hence this y is seen like this. इसके आधार पर अगर हम चर्चा में आए हैं
तो हमको पता चला है कि ये हमारा एम्पलीट्यूड है, दैट इज A0 इज द एम्पलीट्यूड, हेंस क्वेश्चन नंबर A, determine the amplitude of the wave. The amplitude of the wave is amplitude of the wave is 0.5 meter, that is the maximum displacement. Direction of the electromagnetic propagation of the electromagnetic wave, the propagation of electromagnetic wave, EM wave, is opposite to x-axis, that is negative of x-axis. You can say negative of x-axis, that is negative of x-axis. You may write like this also. And question C, what will be the direction of the magnetic field? Magnetic field will be the negative of the z axis. The magnetic field will be negative of z axis. This is the question number 8. Dear students, इसके बाद जो बाकी प्रश्न इसमें हैं मेरे अगले वीडियोज में आपको प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।